Assalamu alaikum class. I'm here once again with a new lecture. I'm Asim, your teacher of Introduction to Language Studies. This is our second lecture. The topic for this lecture is already been taught in the class. You know that already. And let's see what it brings us, and hopefully you will understand that. So our topic of lecture today is the origin of language. That means where the language is actually started and from where that is started. So there is no obvious point that when it is actually started. There is no exact year or date or day or a place where the language has been started. But there are so many speculations and hypotheses about the language, and no one knows that where actually it started. And no one knows exactly where and how human beings came up with spoken language. One hypothesis is that language began between 100,000 or 50,000 years ago with the advent of modern man, AI, Homo sapiens. ओके जैसे कि इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि कोई नहीं जानता कि कब लैंग्वेज वजूद में आई। बहुत सारे मफरूज़े हैं उस पर, और उस पर तफुज़ात भी होंगे लोगों को कि कहाँ से शुरू हुई लैंग्वेज। एक मफरूज़ा है कि ये 1,00,000 साल पहले या 50,000 साल पहले वजूद में आई। बट उसके साथ ही मॉडर्न मैन जो होमो सपियंस ने कहा जाता था पुराने दौर में, जिसका मतलब क्या वाइज मैन, अक्लमंद आदमी, उन्हें कहते थे होमो सपियंस। तो मतलब कहने का इनका ये है कि जब इंसान का वजूद हुआ, वाइज मैन, दे आर टॉकिंग अबाउट वाइज मैन, जब इंसान का वजूद हुआ तो तब ये लैंग्वेज का स्टार्ट हुई 1,00,000 या 50,000 साल पहले। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस इज वेल बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द रिटन लैंग्वेज। अबाउट 500 years ago we have direct evidence and artifacts about writings। और इसलिए एक बात तो तय है कि लैंग्वेज जो स्पोकन है उसके बारे कोई सर्टन थिंग्स नहीं है कि कब स्टार्ट हुई। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, वी सी दैट कि रिटन लैंग्वेज की एविडेंस मौजूद है कि ये 5,000 साल पहले वजूद में आई, और डायरेक्ट एविडेंस है, आर्टिफैक्ट्स हैं अबाउट राइटिंग कि ये मतलब 5,000 साल पे वजूद में आई। और उससे पहले क्या था? स्पोकन लैंग्वेज। We don't know about that and where actually it started and where and from when it is started. तो क्वेश्चन जो माइंड में आते हैं कि when, how and where the language was started actually. But the answer is no. There is no certainty, there is no evidence, and there is no fact that language, when, where and how that it started. और ये एक मफरूज़ा है, रिडल है, that cannot be solved actually, और उसका जवाब मिलना I guess, and that is almost next to impossible. You may try that and you may research a few things on that, but you won't find anything like that. I will discuss that in 1866, I guess. The Research and Linguistic Center of Paris has banned the center, कि इसको बंद किया जाए, कि इनकी सर्टन कोई चीज़ें हैं ही नहीं जो हम सीख पाएंगे या इनके कोई फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलता। Obviously these were the things that related to that, and there is no certainty that language, when, how it was started। कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिस पे हम बेस कर सकें कि हमारी लैंग्वेज की स्टडी है वो शुरू कहाँ से हुई। Obviously there is
um, evidence about the written language, but no oral language. The next is outline of today's lecture. First of all, introduction है that I have already given that introduction के वो है क्या, and the origin of language, ये कहाँ से start हुई, and divine sources, वो खुदा ने जो ज़राए दिए हैं उनको देख के, and the natural sound sources, ऐसे sources जो natural कि कोई sounds है उनको देख के हम सीखते हैं. the oral gestures source, ऐसे gestures देते हैं, इशारे देते हैं हम कि कहाँ से ये लैंग्वेज हम सीख पाते हैं. एंड द नेक्स्ट फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स, जिस्मानी तौर पर जब हम चीज़ें अडेप्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज जेनेटिक इनेटनेस सोर्स, obviously that theory has been given by the Noam Chomsky, the living legend and linguistics man who worked so many things on the language. And next is conclusion. That is actually the gist of our today's topic: introduction, original language, and divine sources, natural sounds, sources, oral gestures, source, physical adaptation, genetic innateness, source, conclusion. These are the topics that would be covered today, and obviously you have read it already. We have studied and we have discussed that in the class already. We have, and you have the idea about this, all things that are on the slide actually. Next is the first question that comes to mind when we study language, that what is language? And the next question that ours is basically is that when and how language began. पहले हम पूछते हैं कि लैंग्वेज है क्या, फिर हम बताते हैं कि कैसे और कब लैंग्वेज शुरू हुई. So these are the mysterious questions that cannot be answered actually with any evidence or with any certainty. There will be a no answer, I guess. And let's see what the next slide brings us. This is the man who actually gave few theories about the language and कैसे उन्होंने सीखा सारा कुछ, ये हमें बताते हैं इसमें. Max Muller. Some theories of origin of language invented by Max Muller. Basically, invented in 1861. There are different other people who gave theories after his theories. So, what are the theories you know that about that? The ping pong and the ding dong theory, and there is a Tata Lala theory. As a different thing that you know about that. Bow-Wow theory. According to Max Muller, Bow-Wow theory. What is Bow-Wow theory? According to this theory, language began when our ancestors started imitating the natural sounds around them. The first speech was onomatopoeic and marked by echoing words such as moo, meow, splash, cuckoo, and bang. These are the words that he introduced. And उसने कहा कि जब हमारे इंसेस्टर्स ने ये चीज़ें करना शुरू की तो वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इमिटेट करते थे नेचुरल साउंड्स को जो उनके इर्द गिर्द हुआ करते थे. उसके बाद वो ओनोमोटोपिक दौर में मार्क करते इको साउंड जो होते थे, जैसे म्याऊ और स्प्लैश और इस तरह के साउंड जो होते थे वो कैरी करते थे अपने साथ. तो
तो मतलब वो नकालें करके नकल करके चीज़ों की नेचुरल साउंड्स की और स्पीच की, और जैसे कि ऐसे वर्ड्स होते मॉम मियाओ, उस तरह वो बॉब थ्योरी दी गई थी, फिर वो उनसे वो आगे चीज़ें सीखते थे. नेक्स्ट इज द यो ही हो थ्योरी. This theory based on the notion that speech arises from physical environmental needs which produce communal rhythmical grunts which later on developed into chains. तो इस थ्योरी में मैं बताता कि इन्वायरमेंट में जो नीड्स होती है हमारे जिस्म की, उससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं कम्युनियल होता है. पहले तो वो सबके लिए होता है, फिर उसके साथ रिदमेटिक ग्रंट्स बनते हैं, कराना, और उसके बाद लेटर ऑन वो ही नारा बन जाता है, या फिर वो उनके मंत्र बन जाते हैं, या चेंट बन जाते हैं, गीत बन जाते हैं. उसके बाद कुछ और थ्योरीज भी उन्होंने दी थी, लाइक द पोंपो थ्योरी. तो पोंपो थ्योरी में क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में. That is based on the evidence that speech arises through people making instinctive sounds. तो उसका मतलब है कि लोग इंस्टिंक्टिवली जो अंदर से साउंड करते हैं, वो पोंपो थ्योरी है. जो अंदर से इंस्टिंक्टिवली जो साउंड निकलते हैं, उन साउंड से वो आगे सीखते थे अपनी लैंग्वेज, उसके मुताबिक वो वहाँ से शुरू हुई. तो उसके बाद एक उसने और थ्योरी पेश की, जैसे द डिंग डोंग थ्योरी. तो डिंग डोंग थ्योरी क्या थी? बेसिकली पोस्टिल्यूट्स करता है कि दैट स्पीच अराउज बिकॉज पीपल रीच टू द वर्ड अराउंड देम एंड पीपल रिएक्ट टू द वर्ड अराउंड देम साउंड सिंबलिज्म. वो कहते हैं दुनिया जो इर्द गिर्द लोगों के हो रही है, उन पे जो वो रिएक्ट करते हैं, उनके जो रिएक्शंस आते हैं, उनसे वो साउंड्स लेके और उनके रिएक्शन से वो आगे लैंग्वेज सीखते थे लोग. तो साउंड का सिंबलिज्म होता है. सिंबलिज्म जो मैंने आपको बता चुका है, कोई चीज़ किसी और के लिए स्टैंड कर रही हो, सिंबलाइज कर रही हो उसे, उसकी अलामत को जाहिर कर रही हो. तो इस डिंग डोंग थ्योरी में वो ये बताते हैं. ऑब्वियसली मैंने आई डू नॉट पुट दैट all the theories in this lecture on this slide because it will be very long, and I want to make it short because it would be easier for you to understand that. तो डिंग डोंग थ्योरी में इजी अल्फाज में आपको ये बताऊं कि वो रिएक्शन देते थे लोग, उनसे जो सीखते थे वो लैंग्वेज. उसके बाद यो ही हो थ्योरी तो आप ऑलरेडी ये दैट इज ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव डिस्कस्ड इट बिफोर दैट, एंड यू नो दैट ये कम्युनल रिथमेटिक करंट्स होते हैं, और लेटर ऑन दैट विल डेवलप इनटू अ चेन्स. और नेक्स्ट जो थ्योरी उसने पेश की थी वो लाला, जो उसे टाटा भी कहते हैं, थ्योरी पेश की थी उसने. सो अकॉर्डिंग टू मैक्स मिलर, the theory that provides that if any single factor was responsible for initiate human language, it would be a romantic side of human life. तो वो कहता है कि कोई भी अगर तरीकाकार होता दुनिया में लैंग्वेज सीखने का, तो वो एक ही होता, इंसान का जो रोमानवी अंदाज और उनकी सलाहियत है वो होता. जो उसका रोमांटिसिज्म है, उसके अंदर जो रोमांस है, उसके अंदर जो प्यार, अगर कोई भी लैंग्वेज अगर सीखी जाती तो वो उसी तरह सीखी जाती, अदरवाइज और कोई जरिया नहीं है. बेसिकली इतनी थ्योरीज आपने पेश की कि उसने मैक्स मिलर ने, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इतनी सारी थ्योरी पेश क्यों की गई. एंड दिस थ्योरीज आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर. वो बहुत सब मार्जिन थोड़ा है उनमें, डिफरेंस बहुत थोड़ा है, तो समझने में सम टाइम मुश्किल होती है. तो आप सोचेंगे इन्होंने ऐसी थ्योरीज क्यों पेश की. तो ये जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते गए तो अगली नेक्स्ट थ्योरी पेश किया था. लेटर ऑन जो लास्ट उसकी थ्योरी थी वो लाला टाटा ये थ्योरी थी. तो उसने कहा अगर कोई जरिया हो सकता है लैंग्वेज सीखने का, वो इंसान की रोमांटिक साइड है, रोमानवी साइड है, जो मोहब्बत और प्यार का वो इजहार करता है. तो वही एक तरीका है जिससे आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, अदरवाइज कोई और जरिया नहीं है. तो बेसिकली थ्योरीज वो तो और भी काम की थी, साउंड से सीखा जाता है, या फिर रिएक्शन से, या इंस्टिंक्ट से, या फिजिकल नीड से, या फिर रोमांटिसिज्म से.
सारी चीज़ें उस पर रिलेट करती हैं, थ्योरी सारी वो ऐसी ही है। नेक्स्ट इज नेचुरल साउंड सोर्सेज। अब नेचुरल साउंड सोर्सेज क्या है? नेचुरल साउंड सोर्सेज यही है कि लैंग्वेज इमर्ज फ्रॉम नेचुरल साउंड्स। वो कहते हैं लैंग्वेज जो है वो कुदरती जो आवाज़ें हैं या साउंड्स हैं उससे ही आगे मिलके बनती है। एंड द नेक्स्ट इज primitive words are considered to be imitations of natural sounds that people hear around them. And next is the natural sound is bird makes are argued to have been used to describe that particular animal. And next is the fact that in many languages there are words such as drip, click, meow, and honk that sounds like word they mean support this claim. Not every sound is onomatopoeic in language. तो अब ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नेचुरल साउंड सोर्सेज से आप लैंग्वेज सीखते हैं, उसका ये एक और पॉइंट। आई ऑब्वियसली दैट डिडंट रिप्रेजेंट बाय मैक्स मुलर, बट ये एक और थ्योरिस्ट ने पेश किया कि जो नेचुरल साउंड होते हैं उससे सीखा जाता है। तो नेचुरल साउंड इमर्ज करते हैं, प्रिमिटिव वर्ड्स होते हैं कंसीडर टू बी इमिटेशंस होती हैं लोगों की नकलें करके, या फिर नेचुरल साउंड्स होते हैं जो बर्ड्स देते हैं उससे आप सीख पाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं। And next is the fact that in many languages there are words such as trip, click, and meow and honk that sound like word they mean supports this claim. Not every sound is onomatopoeic in language. तो नेचुरल साउंड बहुत बड़ा जरिया है सीखने का लैंग्वेज को। तो इसलिए द स्लाइड क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है द डिवाइन सोर्सेज। कहते हैं कि खुदा ने जो सलाहियतें दे दी गई हैं हमें वो जराए हैं सीखने के। तो ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम वी हैव बिलीव दैट द कुरान ने हमें जो दिया है दैट इज द अल्टीमेट थिंग। जो अल्लाह ने हमें कहा है दैट इज एन अल्टीमेट थिंग, उससे नहीं डिनाई किया जा सकता। बट as a literature student or a language student we have to study all these, and we have to study all the religions, and but have to study all other religion except Islam। तो भी पढ़ने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है। तो डिवाइन सोर्सेज जो है वो क्या हो सकते हैं? जेनेसिस कहता है कि गॉड क्रिएटेड एडम एंड व्हाटसोएवर एडम कॉल्ड एवरी लिविंग क्रिएचर वाज द नेम देयर ऑफ। तो वो क्रिश्चियन बिलीव है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब बनाया तो फिर वो लोगों को जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, रहन सहन की कोई भी हो, उसको फिर देयर ऑफ क्या क्या पुकारते थे, इसका या उसका, इसकी तरफ इशारा करके। being a Muslim, let's see what Quran says. The Quran, in Quran, he said, "O Adam," Allah फरमाते हैं, Adam informed them of their names, and when he had informed them of their names, Al-Baqarah, ये सूरह अल-बकरा में ये बयान किया गया। अल्लाह ताला उन्हें कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम उनको अपने नामों से पुकारो, उनको नाम बताओ उनके। तो दिन आदम अलैहिस्सलाम ने उनको उनके नाम बताए। लेट्स सी कि हिंदू बिलीव्स क्या है। वो कहते हैं लैंग्वेज केम फ्रॉम सरस्वती, वाइफ ऑफ ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। उनके मुताबिक हिंदुओं के, नाउज़ बिल्लाह ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते कभी भी ऐसा वो करते होंगे, मतलब वो तो करते हैं, हम बिलीव नहीं करते उनकी बातों पे। वो कहते हैं ब्रह्मा जो है उन्होंने ये पूरी कायनात बनाई है। तो क्योंकि वो तो उधर कायनात बनाने में बिजी होगा, तो उसकी बेगम जो सरस्वती है उसने जो है वो लैंग्वेज स्टार्ट की, तो उससे ही लोग लैंग्वेज सीख पाए। बीइंग अ मुस्लिम आई don't believe on that, but according to language students who have to take their perspective as well, according to them language came from Saraswati, wife of Brahma, creator of universe।
Given and other divine source attempts to find a divine, God-given language. Samthik carried out an experiment with two babies, depriving them of human contact. They uttered the word Bacchus bred in Phrygian. The King James IV did a similar experiment and the kids were reported to speak Hebrew. And the fact is children who are deprived of any language cannot, sorry, contact cannot learn any language. So Samthik जो था, he was king of Egypt and he was traveling to Egypt where he gave two child to a shepherd and asked them to do not speak to them, just let them feed and just let them eat or whatever they want, just do not speak to them. The first word those children spoke was Bekos, that means bread, and that was the word of Phrygian language. Obviously, that was way back Egyptian word that is ancient language, but a shepherd whom those children were given, who said that Phrygian was way before the Persian and Egyptian language. And the next one, the King James IV did similar experiment. बच्चे ने फिर वो जब बोला वो हैब्रू लफ्ज़ था, तो वो भी एक कदीम ज़बान है. तो फैक्ट ये है कि बच्चे को जब जहाँ छोड़ा जाए और वहाँ कोई लैंग्वेज ना हो, कांटेक्ट ना हो लैंग्वेज का, तो फिर वो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखता. उनका बिलीव है कि वो फिर वो खुदा की दी हुई जो लैंग्वेज है वो उसे सीखते हैं. Next, physical adaptation source. Human beings are genetically with some physical features that are responsible of producing speech sounds. ह्यूमन बींग्स जो है उसके फिजिकल कोई अडेप्टेशन होती हैं. फिजिकली वो चीज़ें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं. तो वो जो फीचर्स वो अडेप्ट करते हैं, जो सोर्सेज वो अडेप्ट करते हैं, जो उनकी फीचर्स होती है जिसकी वजह से जो अडेप्टेशन उनमें आती है, वो बेसिकली आपको लैंग्वेज सिखाती है. तो इस स्लाइड में वो कहता है ह्यूमन बींग्स आर जेनेटिकली विद सम फिजिकल फीचर्स. तो वो कहते हैं बुनियादी तौर पर या बाय बर्थ उनमें एक क्वालिटीज़ होती है, उसको फिजिकल फीचर्स होते हैं उसमें, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड. तो जो कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं वो उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में. तो ये कहते हैं कि फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स ये है कि इंसान जो फिजिकली चीज़ों को अडेप्ट करके और जो उसके फीचर्स होते हैं फिजिकली जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उससे हम लैंग्वेज सीखते हैं. नेक्स्ट इज जेनेटिक इनेटनेस सोर्स. अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, ये उसने ये दिया था कॉन्सेप्ट कि अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज इज पार्टली इनेट एंड पार्टली एक्वायर्ड. लैंग्वेज आधी तो फितरी होती है, आपके अंदर ही होती है, और आधी आपको सीखना पड़ती है. तो इनेट होती लैंग्वेज, आर्बिट्री होती है, फितरी होती है. आप जब माहौल में ढल जाते हैं तो वो लैंग्वेज सीख जाते हैं आप. तो नॉम चॉम्स्की यही कहता है कि लैंग्वेज जो है वो आधी आपके अंदर होती है और आधी आपको अक्वायर्ड करना पड़ती है दूसरों से, माहौल से, साउंड से, फिजिकल अडेप्टेशन से, इमिटेशन से, रिएक्शन से, फिजिकल नीड से, रोमांस से, रोमांटिसिज्म से, रोमांटिक साइड से, इन सारी चीज़ों से आप सीखते हैं लैंग्वेज. नेक्स्ट इज देयर आर फ्यू ओरल जेस्चर्स सोर्सेज. कुछ और ओरल जेस्चर्स हैं जिससे आप लैंग्वेज सीखते हैं. Originally, a set of physical gestures was developed as a means of communication. Then a set of oral gestures, especially involving the mouth, developed for expressing ideas. तो कुछ oral gestures होते हैं आपके जिससे आप लैंग्वेज सीखते हैं. स्लाइड में बताते हैं ओरिजिनली ये सेट ऑफ फिजिकल gestures was developed as a means of communication. वो कहते हैं बुनियादी तौर पर जो फिजिकल जेस्चर्स आपके बने हैं वो एक कम्युनिकेशन का, बातचीत का जरिया है.
Then a set of oral gestures, especially involving the mouth, developed for expressing ideas. कहते हैं ख़ास तौर पर वो सेट ऑफ जेस्चर्स हैं oral gestures जो माउथ है वो मेन किरदार अदा करता है उसके मुताबिक वो कहते हैं वो ही आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। फिजिकल जेस्चर्स क्या होते हैं? आप हाथ से बात कर सकते हैं, वहाँ तो माउथ नहीं है, बट फिजिकल जेस्चर्स इंक्लूडिंग माउथ क्या होता है? दे आर सो मैनी जेस्चर्स जो आप मुंह से बनाते हैं और फिर सीखते हैं। और उसके बाद स्पीच साउंड्स हैं, वो साउंड्स को बोल के आप ये जेस्चर्स दे के आप उससे लैंग्वेज सीखते हैं। Next conclusion, all presented theories do not precisely demonstrate what is the original language, but that is clear cut in the past people were only able to overdo some gestures and produced a few sounds. Okay, although कोई कंक्लूजन तो इसका नहीं है, अल्टीमेट बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जब आप सर्टेनिटी से कह सकें, बट एक क्लियर कट बात तो है कि पुराने लोग जो थे वो इस काबिल तो थे कि वो जेस्चर्स से प्रोड्यूस करके जो साउंड प्रोड्यूस करते थे उनसे वो लैंग्वेज सीखते थे। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। एंड इसलिए आपको ये समझ आया होगा, पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास में भी। आई बट आई हैड टू रिपीट दैट लाइक हियर आई हैड टू मेड इट बिकॉज ऑफ you, because of the policies, and hopefully you understand that। और आप क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर हम आपस में दोबारा डिस्कस कर चुके हैं, हम आपस में डिस्कशन कर चुके हैं। तो we have done so many things on that topic। hopefully things are clear and thank you very much। अगर क्वेश्चन है तो you may ask me in the WhatsApp group। thank you very much।